Hello, everyone. I hope everyone is doing good. Let me know if I'm audible on chat. Okay. So seems I'm audible, right? Great. Okay, so let's begin. We will continue from the last session where we have left. So I will share my screen to you guys first. So we will discussing about the topology. From the session we have left from the last session. Tomorrow we have discussed about the topics, the modules that will be covering up. And in the end, we have discussed the topologies that we will be working on. So there, one of the topology that we are going through, that would be on your screen. I will explain this topology so that you understand what we will configure to meet this business requirement. Let's say we have head office on the left hand side, and we have a branch office on the left hand side. So this firewall, so we can see Sophos Firewall on the head office. We have multiple ISPs so that we can load balance the traffic between those ISPs. We'll configure through Sophos Firewall. So yes, again, we have two ISPs connected with Sophos XG, or you can say XGS devices. Here we will use virtual. We also have two MPLS link, as you can see here. This is the scenario where we have created MPLS connections. So we will discuss, we will configure MPLS as well on the firewall, and we'll see the working, and we will see the failovers. So we have failovers. We will test. Main task is to check that we have a good failovers. We have zero downtime in our network, right? So we have, let's begin with the firewall. So we have firewall also in HA, high availability. So if any of the firewalls fails in any of the reasons, due to hardware reasons or any of the reasons, the traffic will get moved to the active one, the active firewall. If let's say we can configure this firewall in activity to load balance the traffic of LAN users. We will also configure the HA in active and active passive both. So we have failovers, right? So internet failover we have multiple ISPs. Let's say we will also configure two more ISPs. So 4 ISPs, 2 MPLS and HA. Then we have L3 switches, LAN network here, and we will expand this network later on. But for test purpose, we have one AD server and Windows server. So we will just walk through the existing configurations, and we will see some settings, and I will also guide you. So we will go through some theory part, and then later on we will we will start this lab from scratch. All right, so if I just click on I hope everyone is clear with the topology. Okay, so this is the head office again, and this is our branch office. We have one PC here. So we have network running here and here. So the task is to the head office and branch office towards the head office. They should communicate each other, all right, without any delays or without any interruptions. So that we have to configure. So we will configure those things in our lab. So what we'll do, we'll look into this configuration. We'll look into the MPLS configuration, then we'll look into the branch office configuration one by one. All right, so just let me just log into the access this PC. Right, let me just zoom it. I will zoom it for you. So the default IP, I'm just accessing the firewall. Let me just zoom it more so that you can see.
Okay. So we have access to the head office firewall. All right. So let me just click on the administration first and show you the current license. We will go with the license as Ketan is there, right? Yeah. So we will the doubt will be clear here. Yeah. So yes, we will be using all the licenses. So if I just zoom the license, right? Let me zoom the license for this device. What we have here, we have base license, all right, for 1 month. We can use this firewall for 1 month, stateful license, VPN license, wireless license. We have network protection license, all right. हमने जो कॉल मॉड्यूल्स डिस्कस किए थे, सारे मॉड्यूल्स के लाइसेंस हमारे पास यहाँ पे है और सारे लाइसेंस हम यूज कर सकते हैं. अगर रियल लाइफ सिनेरियो में अगर कोई पर्टिकुलर लाइसेंस या पर्टिकुलर फीचर नहीं चाहते, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बाय दोज लाइसेंस. बट इफ यू रिक्वायर्ड, अगर आपको सारे फीचर्स यूज करने या फिर जो भी डिफाइन फीचर्स यूज करने हैं, देन आपको उसके लाइसेंस लेने पड़ेंगे. बट हम यहाँ पे लैब पे सारे लाइसेंस यूज करेंगे और सारे फीचर्स एक साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे. ऑलराइट, you can similarly you can use all the features on your, those who are working with firewall, they can use all the features and the license so that you can use आपके जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर स्क्रॉल करूं मैं, सो वी हैव वेब प्रोटेक्शन लाइसेंस ऑल्सो. हमें यहाँ पे फ्री ट्रायल है. ओके, सो इफ यू आर यूजिंग वेफ, ओके, वेफ जो फीचर है, ठीक है, सोफोस प्रोवाइड करेगा आपको, एंड वी विल सी व्हाट इज वेफ लेटर ऑन इन मच मोर डिटेल. बट लेट्स टॉक अबाउट द लाइसेंस. अगर आपको वेफ यूज नहीं करना है, अगर आपको अपना सर्वर फायरवॉल से नहीं प्रोटेक्ट करना है, देन डोंट वरी, यू डोंट हैव टू बाय द लाइसेंस फॉर वेफ. Or if you don't want to protect your emails, you don't have to buy the license for your email. But if you, yes, if you want to protect your emails, the license is required. Then we have this is the free license, so we will not be getting enhanced plus support from Sophos. But yes, if you want anything to be done from the Sophos firewall end or kuch issue aa raha hai, then we can just take the help from Sophos. They might help. All right, so let me scroll back. So what license we have? So the license come in different bundles for 1 year, 2 year, 3 years, depends which depend on your requirements. So you can buy as per your, we'll discuss those license for 1 year, 2 year in next class. So here we will be using network protection license, web protection license, 0-day protection. Also, this web protection will have the license for application control, malware control, everything. We will be using SDWAN features, so we have license for that as well. All right, so on lab, yes, of course, you will get all the license. You don't have to worry about to purchase the license. It is the free trial, so we can use it. All right, so this would be the license of the device. You can see under system, administration, and licensing, and your license. All right, आप सारे लाइसेंस एक साथ भी यूज कर सकते हो, नो वरीज. और पर्टिकुलर सिर्फ वेब प्रोटेक्शन ही करना है सिर्फ, तो सिर्फ वेब प्रोटेक्शन का लाइसेंस लो तो आपको वेब प्रोटेक्शन मिल जाएगा. लेट्स से इफ यू वांट टू ब्लॉक फेसबुक, यूट्यूब, देन यू हैव टू बाय web protection license. Rest maybe rest email protection, web protection might not require. All right, so this is the license. All right, so we apart from license, let me just go through the settings of this firewall, what we have here. So we can see HA है, right? तो हमारा सबसे पहले HA का सेटिंग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्फ़िगर भी करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. जस्ट हैव अ लुक फर्स्ट एंड देन वी विल सी कॉन्फ़िगर द सेम सेटिंग्स वन बाय वन. सो HA, सो वी हैव एक्टिव. तो हम एक्टिव कॉन्फ़िगर करेंगे, एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगर करेंगे, एक फायरवॉल उसको शट डाउन करेंगे और देखेंगे हमारा यहाँ से कंटिन्यूस पिंग लग रहा है कि नहीं. और सो हम एक बार एक system की settings एक बार देख लेते हैं. So what system configuration we have here? If I can zoom it, let me see. I think I did that. Let me check. Okay. Properties. Let me zoom it this much. It's fine. Okay. So
ये सिस्टम का आईपी क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं. सो इट इज 172.16.16.100. ऑलराइट, you can see here. Let me mark it for you. And what is the gateway? That is the firewall. ओके, तो फायरवॉल हमारा गेटवे. तो जैसे हमने कल पढ़ा था गेटवे स्टार्ट किया था राइट थियोरी में. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द गेटवे और सारे जितने भी मॉडल्स हम गेटवे मोड पे ही पढ़ेंगे. बट यस ऑफ कोर्स वी विल सी अदर मोड्स लाइक ब्रिज मोड क्या है और एंड मिक्स मोड क्या है, डिस्कवर मोड क्या है. यहाँ पे डिस्कवर जैसे सिस्को में स्पैन होता है उस पे से सिमिलरली डिस्कवर मोड होता है. विल डिस्कस दैट लेटर. सो लेट्स जस्ट वेरीफाई द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन. सो वी हैव गेटवे Sophos and the IP address of this system is 16.16.100. All right. So let me just show you now the high availability active. हाई एबिलिटी जनरली क्या होगा हमारे यहाँ पे जीरो डाउन टाइम होगा. यहाँ पे अगर कोई भी फायरवॉल, अगर हमारे पास एक फायरवॉल है जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्रांच ऑफिस में एक फायरवॉल है, अगर एक वो फेल हो जाता है तो व्हाट इज क्या होगा, मींस राइट वी हैव डाउन टाइम देयर. बट if you don't want downtime, we should place another firewall in active or active passive mode so that वहाँ पे हमारा full network coverage रहे, right? So we don't have the downtime for that. So we'll see how we can meet this requirement. We will configure this. So we have configured HA here. You can see the existing setup of this HA. We are monitoring the port. If this port is getting failed, then HA will take over. We'll see the logs, कैसे HA form होता है, all right? कैसे sync होता है, कैसे configuration sync होगी, कैसे traffic load balance होगा एक्टिव में और एक्टिव पैसिव में. जब आप एक्टिव करते हैं तो दोनों में लाइसेंस चाहिए होता है. यानी अगर आप जो ऑन प्रीमाइसेस फायरवॉल्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल फायरवॉल्स होते हैं, उस पे हमें दोनों पे लाइसेंस लेना पड़ेगा. ऑलराइट, दोनों अगर एक्टिव चलाना है तो. अगर एक्टिव पैसिव चलाना है इट्स फाइन, यू कैन परचेज वन लाइसेंस फॉर वन डिवाइस, ऑटोमेटिक दूसरा उसको सिंक कर लेगा. ऑलराइट, सो विल सी दोस थिंग्स इन मच मोर डिटेल इन दी पर्टिकुलर मॉड्यूल होगा हमारे इसके पास. बट यू कैन सी वी हैव एचए सेटिंग्स. अगर एक फायरवॉल फेल होगा तो दूसरा, तो जो दूसरा फायरवॉल है वो उसका आईपी क्या है 170.16.16.17. चलो उसको एक्सेस कर लेते हैं. तो जब भी आप एचए कॉन्फ़िगर करो दोनों फायरवॉल का एक्सेस GUI पे आ जाना चाहिए. ऑलराइट, so it works on 4444. So let me just log in or take the GUI. Right, so this is the another firewall, secondary firewall, right? Okay, those who have any doubt just raise the hand. I will just see if anyone has any doubt. Right, so we have access to the secondary firewall here. Right, we will not log in, it's fine. So this is the HA configuration here. All right, what we'll now we will look into the network configuration. So go to configure and network. All right, so what we have here, so we have HA link here on this port. अभी port A है जो हमारा, ठीक है, वो हमारा कौन सा LAN port है. Okay, so we will configure this one by one. Not to worry, just have a look on the existing settings. So we have LAN. All right, और उसका नेटवर्क हमारा है 172.16.16.16. पोर्ट B is WAN, एक इंटरनेट कनेक्शन है हमारा. All right, so you can assume any IP. So here it is 192.168.98.2. All right, we will use this port C as DMZ zone later on. Then we have port D और एक इंटरनेट कनेक्शन है हमारे पास. All right, so it's 192.168.99.2. This is 98.2. Right, then we have port G again. This is my MPLS link 1, and another I have MPLS link 2 on port H. Right, so this is my configuration. We have 8 ports here. 2 ports यहाँ पे है जो मैंने HA के लिए यूज किए. Right, so there are 2 other ports. Total I have 8 ports on this firewall. जो फिजिकल फायरवॉल्स आती है उस पे पोर्ट्स डिपेंड करेंगे आपके हार्डवेयर, कौन सा हार्डवेयर ले रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा है. सो विल डिस्कस अबाउट द साइजिंग, आपको कौन सी फायरवॉल लेनी चाहिए एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आपका नेटवर्क है उस हिसाब से. सो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. वी कैन एक्सपांड, लैब पे तो हम एक्सपांड करके पूरा टेस्ट करके हम डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द सेटिंग्स टिल नाउ. So we have some zones. Let's see what is zone here. Anything. So
there are default zone, LAN zone, WAN zone, DMZ zone, VPN zones and Wi-Fi zone. हम उसको edit नहीं कर सकते, but अगर हमने कोई custom zone create किया है, then we can edit and we can enable the settings which are required. We will see these settings one by one later on. Now, Vent Link Manager. यहाँ पे आपका जितना भी इंटरनेट जो WAN connections होंगे, all right. So we will see here. These are the WAN, all the internet. There is internet, and this is the MPLS link, as I said, the 1 and 2. So we have internet on port B, port D, or MPLS 1 and MPLS on G and H. All right. So we'll also troubleshoot अगर कुछ issue आता है जैसे कि ISP down है, all right, ISP down नहीं है क्योंकि मेरा तो router अभी up ही है. So we'll see that, troubleshoot भी करेंगे, उसको fix भी करेंगे. All right. So yes, of course we have some DNS. You can set your DNS if you want, but अभी के लिए मैंने edit किया हुआ है. All right. We can configure DSCP on firewall, but may L3 पे DSCP, I will run DSCP on that. All right. So these are the configuration for under network. All right. And then let's move to IPsec site to site. So we have site to site connections. So we have failover. If one ISP gets failed, then another will take it over. All right. Let me just ping wipe. So branch office का जो network है वो मेरा 172.16.17.0 है. So IP is the firewall का जो IP है उसका 16 है. Okay, so let me just ping. So I can ping that IP. तो ping तो हो रहा है. So I will see where the traffic is passing. Traffic कहाँ से जा रहा है. So what I will do, I will go to monitor and analyze, diagnostic, packet capture, and click on configure, and let me just put the destination IP 172.16.17.16. okay, and proto ICMP. Okay, click on save and turn on the packet capture. So let's see traffic kahan se ja raha hai. All right. Okay, currently it is going through MPLS. Should not be, right, actually. Okay, we'll fix this. Yes, now I can see the traffic. So I can see traffic कहाँ से जा रहा है मेरा IPsec से जा रहा है. All right, क्योंकि अभी मेरा MPLS जो है वो मैंने डाउन किया हुआ है. तो मैंने failover कैसे रखा हुआ है. पहले 2 MPLS है. अगर कोई भी MPLS फेल होता है तो पहला वाला प्रायोरिटी पे रखा है, दूसरा वाला मैंने सेकेंडरी पे रखा है. So पहला, if first is getting fail, it will move to second MPLS. Let's say both are getting fail, then the traffic will pass from first IPSecVPN. अगर वो भी fail होता है तो fourth IPSecVPN से मेरा traffic जाएगा. So I have 4 redundant link. I can see traffic is moving. That's the reason I can ping the opposite firewall. Okay, so ये मेरा branch office है. You can see this is the branch office. उसको थोड़ा refresh कर देते हैं. Okay, so here it is. So this is my branch office firewall. It is 172.16.16.17.16. All right, so I'm pinging from head office. तो जो PC है मेरा वो head office में, मैं head office से कहाँ ping कर रहा हूँ, branch office में ping कर रहा हूँ. All right, traffic कहाँ से जा रहा है फिलहाल मेरा अभी IPsec से. Reason है क्योंकि मेरा अभी MPLS down है, मैंने MPLS down करके रखा है. So we'll see this type of failovers. हम failover करेंगे, देखेंगे इंटरनेट हमारा चलना चाहिए अगर मेरा कोई एक firewall down हो जाता है head office पे. Okay, क्योंकि मेरा HMA, right? So if I make a continuous ping, okay, so this is the continuous ping. So what I will do, I can just turn off the firewall. यहाँ से मैं सिर्फ simple lab पे जो firewall है, ठीक है, इसको मैं turn off कर दूंगा यहाँ से. Stop. So traffic कहाँ से जाएगा मेरा, यहाँ से load balance हो जाएगा. जैसे मैं इसको start करूंगा वापस से, तो traffic वापस यहाँ से जाएगा. All right, क्योंकि मैंने इसको set किया है primary. So we'll see that one by one. Let me just go to that PC again. PC पे जाते हैं और settings देखते हैं IPsec का कैसे हुआ. So let's go to routing now. So I have done with the routing with the SD-WAN. All right. So currently, let me just go to gateways. What I have. So again, I have internet connections. I can see जो मैं अभी मैंने आपको दिखाया network में जाके, right? क्या दिखाया मैंने? WAN link manager. ये है global आपका, यहाँ से आपको global मिलेगा. ये global settings है यहाँ पे. All right. Similarly,
अगर हमें यहाँ पे देखना है गेटवेज कौन कौन से हैं, ऑलराइट, सो वी कैन सी इट फ्रॉम राउटिंग एंड गेटवेज। तो वी शुड नो द गेटवे कहाँ से उसको ट्रैफिक भेजना है, राइट। जैसे इंटरनेट का ट्रैफिक है, एमपीएलएस का ट्रैफिक है, एंड सो ऑन। So we have these two internet, all right. So ISP1, ISP2, MPLS1, MPLS2. Currently MPLS is down. So let us do one thing, just a bit turn on kar dete hain, right? So right now you can see it is down. So let me just go and turn on the MPLS1. Okay, एक MPLS on कर देते हैं अभी के लिए, और दूसरा बाद में on करते हैं. So we'll see what is happening here. So let me just go back to that PC and see the settings. कौन-कौन से हमने configuration किए इसको. So we have SD-WAN profile. तो प्रोफाइल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे. So you can see दो प्रोफाइल बनाई है for internet and MPLS connection. अगर मेरा ट्रैफिक MPLS पे, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, if I click on this profile, so what I have defined, फर्स्ट अवेलेबल गेटवे. अगर जो भी मेरा इंटरनेट का अवेलेबल गेटवे है उससे इंटरनेट मेरा जाना चाहिए. जैसे कि अभी ये आईएसपी डाउन है तो ट्रैफिक मेरा ISP2 से जा रहा है, राइट. अगर मैंने इसको फर्स्ट अवेलेबल यहाँ पे अगर वापस रिस्टोर हो जाता है तो ट्रैफिक फिर यहाँ से जाएगा, ऑलराइट. सो यू कैन डिफाइन द पॉलिसी. वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पैरामीटर्स ऑफ SD-WAN प्रोफाइल, but today just look into the profile that I have configured. Right, similarly we will configure and we will discuss much more detail in the modules. तो मेरे पास और एक MPLS की भी प्रोफाइल है, जो मैंने MPLS का प्रोफाइल बनाया है यहाँ पे. ये ट्रैफिक MPLS1 से जाना चाहिए और 2 से. अगर 1 डाउन है तो 2 से जाना चाहिए. अगर 2 डाउन है, 2 तो डाउन होगा तो फिर यहाँ पे MPLS1 से जाएगा, राइट, अगर वो अवेलेबल है तो. सो दिस विल बी दी फेल ओवर कंडीशन, राइट. सो वी कैन सेट, अगर MPLS3 भी है, 4 भी है, देन वी कैन सेट ऑल द. और इसको हम प्रायोरिटी भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से. सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट, राइट. सो दिस इज द पॉलिसी MPLS1 एंड MPLS2. लेट मी जस्ट क्लिक हियर. सो अभी मेरा ट्रैफिक इंटरनेट का कहाँ से जा रहा है, ISP2 से जा रहा है. अगर मेरा ISP2 अप आ जाता है तो टिक मार्क यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ऑलराइट. एंड वी कैन गेट दी सम स्टेटस एंड हियर एवरीथिंग. सो लेट मी जस्ट चेक फ्रॉम वेयर द ट्रैफिक इज पासिंग राइट नाउ. ठीक है, ट्रैफिक पहला मेरा गेटवे अप आया कि नहीं वो देख लेते हैं. सो लेट्स सी इफ माय गेटवे इज अप. सो MPLS1 is up. Okay, I can see my MPLS gateway is up. Let me see the profile so I can see ट्रैफिक अभी कहाँ से जा रहा है मेरा, MPLS1 से जा रहा है, राइट. पहले कहाँ से जा रहा था, IPsec से. तो मैंने प्रायोरिटी कैसे रखी हुई है, MPLS1 से जाना चाहिए, MPLS2, देन IPsec1, देन IPsec2. तो IPsec का कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहाँ पे किया, it's here. Okay, so we have failover with this. दो ISP के साथ हमने failover यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है. So we'll see this, don't worry. Let's come back to SD. So we have profile and we have rules. So this is the MPLS rule. So traffic कौन सा है, source and destination. All right, so let me open this rule, SD-WAN rule. So what we have, source and destination. All right, so अगर कोई भी ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से और उसका डेस्टिनेशन 170 16 16 17 है तो कहाँ से जाना है, मेरा प्रोफाइल से जाना चाहिए. MPLS failover जो मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट. हियर it is passing from this. So let's check again. If I go to diagnostic and packet capture and turn off, clear the logs. Okay, whenever you are yes, make sure that whenever you are turning the packet capture on, जब उसको नहीं चाहिए, you just turned it off. Okay, so let's check the ping. So now you can see traffic is passing from MPLS, right. So MPLS मैंने आपको बताया था मेरा MPLS कनेक्शन कहाँ पे, पोर्ट G और H पे, right. If I go back to again network and this is my H and G, that is MPLS. All right, so now traffic is moved to MPLS, right. तो ट्रेसट करते हैं. Okay, so ट्रेसट 172.16.17.16. Okay, let's tracet. So I think I will get my MPLS router IP here. अभी ट्रैफिक मेरा MPLS से जा रहा है तो, all right. I can see it is passing from IPsec now.
That's the reason it is coming timeout, right? But still, if you see, I can ping the gateway. Okay, so abhi IPsec se ja raha hai, all right? No worries, we will wait for some time. It might take some few minutes because failover कब होगा जब आपका ISP डाउन है या फिर कोई आपका latency है in that case. Okay, so it will take some time. So no worries. So as of now, I am able to ping. So I don't have to worry about the trace route, but yes, of course, we will see. जब हम failover करेंगे, तब हम trace route करके देखेंगे traffic कहाँ से जा रहा है, कौन से MPLS से जा रहा है. All right, so let me just try again if I get the exact trace route. So I will do 16, that is my firewall IP. Okay, it's passing from IPsec only right now. No worries, let's wait for a while. Meanwhile, let's go to diagnostic packet capture and see if the traffic is going on IPsec. So no, we'll wait. Okay, let me clear the packet capture and turn the packet capture back. Okay, we will go इसको slow करेंगे, no worries, and batch में हम सब में आपको packet capture कैसे लेना है और कैसे traffic देखना है, we will see that in case of any issue. So right now I can see traffic is passing from MPLS connection. All right, let me just verify again if I can see. Okay, now let me just see where is the issue. कहाँ पे issue है? So if I scroll, let me turn on this this one. Okay, I will turn on this one. And one more thing I will do, I will go back to that PC. Trace route दिखा देता है, ठीक है, trace route. So we'll fix this. ऐसे ही हम fix करेंगे सारी labs. वैसे इसमें कोई issue नहीं है, but yes, suppose it as it is software based, so we will fix it. Let me just go to routing. Let's fix why the traffic is, I'm not able to see the next hop. So let me just go to gateway. Yes, my MPLS is on. So traffic should pass from this, right? So let me just copy this IP and ping from firewall. So we have tools. So I have on port G. Let me just ping the next hop IP, that is 2 actually. That is my router IP. We'll see that. So my MPLS router is reachable. Let me ping the another one, 55.2 on port H. Ping. Let's see, okay. So I am reachable. So MPLS to reachable here. Again, let's go to packet capture and see. Turn off, turn on. And let me try back if I can trace route. No, it's going from IPsec still. I can see it is directly, the trace route is getting completed. So what we'll do, let's wait. Let me check the configuration now, because what I have did, if I go to routing, I have configured RIP here. So let me see if all the routes are available. So if I go to RIP, okay, so RIP configure karte, right? So if I show you the topology, let me show you the topology what we have. तो यहाँ पे क्या है कि Sophos firewall के साथ मेरा यहाँ पे MPLS पे RIP and EIGRP चला रहा हूँ, right? So we are distributing the networks. Okay, this way I have created the MPLS connection for test purpose. So we'll see. We have all the routes first. All right, so let's check the routes. Okay, so आज fix भी करते जाते हैं and go through भी करते हैं कैसे करना है. So let me just check all the routes are available. Scroll down.
ओके, सो मैंने यहाँ पे राउट्स डाले इन दी रिप कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरा रिप कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे फायरवॉल पे। लेट मी स्क्रॉल डाउन। सो मैंने यहाँ पे अपना नेटवर्क डाला हुआ है। ऑलराइट, सामने वाला नेटवर्क डाला है, दोनों एमपीएलएस का एंड जो पोर्ट पे कनेक्टेड है। ऑलराइट, सो दिस इज द रिप कॉन्फ़िगरेशन एंड इफ आई just go to system administration, device access. Here I have enabled dynamic routing on WAN zone. All right, because मैं RIP चला रहा हूँ, that's the reason. अगर आप कोई भी dynamic protocols चला रहे हो, then you have to enable this on that zone. अगर VPN में चला रहे हो, then you have to enable on the VPN. But we'll see. Let's first see this one. के सारे routes है क्या नहीं. So go to routing again and let's see the information. Let me just click on RIP. All right, now let me just scroll and I have added the interfaces. Let me check if I get the route. So click on information. यहाँ पे आपको information करके मिलेगा. All right, if it is not there, just click on this 3 dot and you will get the information. तो RIP के जितने भी routes होंगे, अगर आप OSPF चला रहे हो, then you will get all the details here. So it's BGP, all the routing protocols details you will see here. So as we are running RIP, we'll see here. Yes, so I can see the routes are available, right? तो मेरा जो MPLS का routes है वो एक MPLS का routes ये है. All right, this is the one MPLS, this is the another one. Let me now rest route if I can. Okay, no worries. Let me just check it back. All right. Now let me just check what is going on here. Okay, let me just check with CLI. Let me log into the CLI. I will restart the session. So yes, let me just show you how I took this as well. So we will have put the session. 132.16.16.16, right? So जब भी आप जब CLI एक्सेस क्या करो, आपको जब let me just mute guys. Okay, so let me just log into the CLI to fix this issue. Let's see if we can. So change the settings और logs हमेशा सेव करो. और क्या तो कैसे logs सेव करना है, अगर हमने CLI लिया है तो यहाँ पे so just second click and go to change settings, click on login, all session output, browse and save it on one location. That is fine. So I can just type sophos.logs. Okay, the extension would be Sophos, then dot and log. You can give the name and dot log. Click on save. Apply it and let it make this large what I'm doing here. So you get the idea. Appearance. So I'll just make it large so that you can see. Apply. Okay, so now I will log in with the admin user. Okay. So this is my CLI. All right, I can see the details of my firewall, the firmware version running. If you have virtual, then you will see virtual model name. If you have hardware like XG120 or 105, you will see the model number here. You will see the host name. You will see HA. It is HA primary or secondary, or I have given the name as node 1, node 2. So this will show you this is a primary. You are on the primary device right now. Okay, so we have these options: network configuration, system configuration, route configuration, device console. सबसे ज़्यादा यूजर हम इसका करेंगे. All right, these two. We have VPN management,
we'll see these options later on one by one. So let's begin with the option number first 4. I'm going to the console access. So I'm just checking my route precedence actually. If you check what are your route precedents, you have to execute this command system route precedent show. So I can see it is VPN static. Okay. So what I will do, I will change this for troubleshoot purpose. All right, set to static SDWAN and VPN. I hope this will help me. So let me just test route. Okay, so you can see now my traffic is passing from 65.1, that is my MPLS right now. पहले कहाँ से जा रहा था? मेरा IPsec से जा रहा था, right? Traffic. But now the traffic is passing from my MPLS. So this way we'll troubleshoot the issues that will come up in the lab. We'll fix it, how we can make it work. All right. So let me just revert these changes. Go to CLI, system route precedent, set. Let me set VPN. That should be completed, right? It should get completed. So let me just try again, VPN, SD-WAN, and then static. Okay, so it got completed. I will keep the routing same again. Okay, you have to perform this only on first lap. All right. So let me see the existing settings, system routing precedent show. So currently it is static, VPN and SD-WAN and आपका ये generally इसका मतलब क्या है यहाँ पे top to bottom काम करेगा. All right. So static route पहले follow करेगा, then SD routes and then lastly VPN routes. So let me just try again. Traffic कहाँ से जा रहा है? Okay, so it is going from my MPLS only. All right, so this is my MPLS links. All right, so it is the test route is getting completed. The traffic is passing from MPLS. So if I make a ping, it should work. Let me try 117.16.16. 17, that is the firewall network 16. Yep. So it goes stop, right? Let me just revert the changes. System route precedence set VPN SD-WAN static. Yeah, so now it's working actually. So we'll see what are the exact issues that we will cover up. If we have this type of issues, we will fix it. All right, so now I can see traffic is passing. Let me just test route back. So now it is passing from VPN. All right. Now let me just check the settings. Click on information. Check the routes. Let me just go to the gateway. So now I can see my MPLS 1 and 2 is up. The traffic is passing from MPLS 1, ISP2. Okay, now let me just re-verify. Everything is working. The default is static SD-WAN VPN. Okay, this is the default settings on the firewall. So let me just check it back. As of now, I will make the reachability. Okay, from other side it's getting dropped, so no worries. Let me just do a ping.
So I set up the same. So let me try back system route, then VPN, SD-WAN. SD-WAN and set VPN static. Okay, this should be fine. Okay, we'll see that. I think we have issue with the MPLS might be. So let me just log into one of the VPN routers. It's the MPLS router here. So what I have here, let me just look on the running config. Okay, so I will try from here 172.16.17.16. Yeah, it's reachable from here. And 172.16.16, that is my head office firewall, that is also reachable. Great, then it should work, right? Okay. So what I will do, let me just check where the traffic is passing right away, right now. So let me just go to the CLI and TCP dump, then apostrophe host 172.16.17.16 and proto ICM. So we will take some dump. Let's see where the traffic is passing. So I can see the traffic is passing from, yeah, let me just make it zoom. And again, let me start the, so I can see my traffic is going from MPLS only. Right, let me just stop it. So I can see traffic is coming from port A, right? That is my system IP 172.16.16.100. And where I'm doing the ping, that is 172.16.17.17.16, right? The request is coming from port A, and the request is going out from port H. All right, that is my another MPLS link. Here it is. Request is going back. All right. Then I'm getting the request reply back from port G. All right, no worries, because it is load balance here. So yes, of course, I'm getting reply packet back from 172.16, that is the branch office firewall, and towards my system. So I'm getting request reply packets here. So it is passing from MPLS. Let's try if the test should works. It should work actually. Test should D, then the destination IP 172.16.17.16. Okay, yeah, the reason is the IPsec. So let me just set the another route precision. So it would be system route set SD-WAN, then static, and then VPN. Let's see this one. So yeah, ping stop. Otherwise. So we'll move to the, because it is issue with the IPSecVPN, we will fix that. We will currently, that is, it is configured on policy bed.
policy base. That's the reason it might not work. We have to configure on the route base. So let me set VPN back, static and SD. Yeah, now it's working. So this way, let's see, test route, it is passing from VPN. Yeah, it's passing from VPN. Set route precedent. System route precedent, sorry, and set, we will see with the static. Yeah, we'll keep this. Okay, so it depends on our scenario. Yes, so this will not work. Set. Let me see if I can test it. No worries, let me just check where is the issue here. We will do one thing. Let me just stop. I will stop this router. Now we wait for some time. Let me see the ping come up or not. So let me set the routing precedent again. Set static. The default one, I will keep it. Let me check the status of the routers. Yeah, here. So it is up. Now let's verify. Okay, so traffic is passing. I'm getting the reply, as you can see here, but yeah, still. Maybe let me fix it if we can do something else. Yeah, so it's passing from MPLS, but yes, the MPLS is causing the issue. No worries. The 69, right? Test route is getting completed, but we will fix that on the other side. From head office, yes, we are moving the traffic.
So let me just turn on the ISPs. Okay, let me do one thing. I will turn off this MPLS. This might be the issue. So we'll fix the MPLS later on. Let's check with the other MPLS we have. Click on SDWAN profile. So we will wait the MPLS link to come up. Let me just go to diagnostic and make a ping. Yeah, it's reachable, right? So let's see. The configuration is fine. Okay, so don't worry, you can use this configuration, but still it is not behaving. So no worries, we will fix this. Yeah, I've tested a lot of things on this lab, so that's the reason. So let's see the traffic. I can see the move, it is moving on MPLS. The port G and H are my MPLS. I'm getting the request reply. Yeah, so might be, let me set it back. Static SD and now let me just check ping if I can have a ping. .16. Nope. 172.16, 17.16. Okay, so VPN is not up. So right now traffic will not pass from VPN. So let's wait. Yeah, now I can see now traffic is moving right towards the MPLS. So it's taking some time actually. So it's fine. Now let me check the connectivity if I'm getting the ping or not. I think it will take some time. 55, 56, yeah, 57. Yeah, now it's working. Right? So issue is with the MPLS 1, right? So we'll fix it. No worries. MPLS 2 is working right now. So we'll see where is the exact issue. Not from the firewall. It is not this. We can confirm where it is the issue. It is from ISP side or the MPLS side, or it is from the MPLS side. All right, just give me a moment. All right, so I can see now trace route is completed. So पता चला हमें कि कहाँ पे इशू है MPLS से इशू राइट हमारे कॉन्फ़िगरेशन तो परफेक्ट सो विल फिक्स इट सो लेट्स ping 172.16.17.16 राइट so I can see the ping अगर मैं पैकेट्स देखूं यहाँ पे अपने CLI पे alright so I can see traffic is going from MPLS H and G is my MPLS. Right, so ping is working, so I can let me make a continuous ping. So here it is. All right.
Okay, so now trace route is completed. So ये भी जो मेरा ट्रैफिक जा रहा है कहाँ से जा रहा है, MPLS से जा रहा है. अब देखते हैं इंटरनेट का ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है. ओके, तो ISP तो डाउन है तो इंटरनेट नहीं चलेगा. सो लेट मी जस्ट टर्न ऑन द राउटर अगेन. राइट, तो पहले हमारे जो भी पिंग नहीं लग रहा था, ठीक है, ट्रेस रूट नहीं हो रहा, राइट. तो कहाँ पे हमारा इशू था, यहाँ पे MPLS पे, वो हम फिक्स करेंगे राउटर की साइड पे. ओके, नॉट फ्रॉम द फाउ. सो दैट्स द रीजन आई एम एबल टू रीच. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट लैब पे, टोपोलॉजी पे. लेट मी जस्ट गो टू द लैब टोपोलॉजी, और जो हमारा ISP, ठीक है, उसको स्टार्ट कर देते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज आवर टोपोलॉजी एंड कॉन्फ़िगरेशन. सेम चीज हमारा है यहाँ पे. Let me just put this PC and everything here. All right. Okay, let me just move it more. राइट, तो मेरा ये हेड ऑफिस है और ये स्विच भी हो गया यहाँ पे मेरा. या राइट अगेन. So I hope I am audible, everyone. Say yes on chat. Okay, so we have, yeah, who has raised the hand? Yes, hello. Let me ask you to unmute. Yes, sir. Hello, yeah. Hello. हाँ बोलिए सर. Can you hear me? Yes. 1 minute. I think there is some issue. Just give me a moment. We can hear you, sir. Yeah, I can hear you now. Can you repeat your question? Yeah, my question is regarding this out-of-band port is available on appliances on the hardware. Just give me a minute. Your name is Ketan. Ketan. Hi, Ketan. Yeah, tell me your. बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. जो बॉक्स जो रहता है हार्डवेयर जो बॉक्स, there is a management out-of-band management port is available on the box. Yes, management port is available for higher end device. तो अगर आपके पास, yeah, tell me. Yeah, go ahead, sir. Go ahead. Yeah, management port will be available on the firewall. You can What access about the. And HA port? You can use any port for HA. आप कोई भी port There use is कर no there is no dedicated. There is no dedicated port on no, high we don't devices. have we don't have dedicated, but yes, of course, we can use any of the port for HA configuration. Because in the Palo Alto and the FortiGate Firewall, they have the dedicated HA port on that. Yeah, the higher end device will have the dedicated HA port, but it depends on the model. Are you on? May I know on which model you are working on right now? And the Palo Alto you're talking about, or Sophos you're talking about? Sophos. No, suppose I seeing first time. So it depends on the model. Though, if you bring the smaller device, you can make any port as HA. So it's very simple. You will see that we can configure to any of these interface and make those port as HA. Okay. Sir, this is firewall configuration. Yeah, this is this firewall configuration. The head office firewall. This you can see the GUI. This is the hardware. Okay, this is the example. Okay.
All right, so you will learn about the configuration from scratch. I'm just showing you the working and the existing configuration on the firewall. Okay. Hello, sir. You can speak if you want to speak in Hindi, or if you have doubt in Hindi as well, you can speak in Hindi, English, anything will do. सर Yes. प्रोजेक्ट में भी सेम रिलेटेड ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन करते क्या सर फायरवॉल? Yes, we will do same configuration होती है, डिपेंड करेगा टोपोलॉजी भी कौन सी है आपके पास. अगर if you are working then you can, तो आप यही सेम फायरवॉल आप वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं विद द सेम क्या है same. बात, हमारा SD-WAN मेराकी है, उसमें मैं नहीं करती, मेरे टीम्स लोग करते थे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं यही फर्स्ट टाइम देखती. जो प्रोजेक्ट जो SD-WAN मेराकी फायरवॉल में भी ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन करते क्या? जितने भी अलग अलग जितने भी वेंडर्स हैं, ठीक है, सब में अलग होता है. जैसे कि यहाँ पे SD-WAN यू कैन सी हियर. अगर आपको SD-WAN सोफोस में कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है. जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल है, राइट, तीन चीजें हैं यहाँ पे. गेटवे है, एज यू कैन सी दिस आर दी WAN गेटवेज, और उसकी प्रोफाइल है SD-WAN. सो यू कैन कॉन्फ़िगर profiles and you can route those traffic through those profile SD-WAN. Let's say अगर आपको वॉइस का ट्रैफिक एक पर्टिकुलर आईएस, आपके पास 4 ISP है, एयरटेल है, टाटा है, ऑलराइट, रिलायंस है एंड सो ऑन. सो अब अगर आपको वॉइस का ट्रैफिक एक पर्टिकुलर ISP से जाने देना है और पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्पीड देना है, देन यू कैन डू विद हेल्प ऑफ SD-WAN राउट्स हियर. यहाँ पे जो रूट्स दिख रहे हैं, राउट्स दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे बहुत सारे रूल्स कॉन्फ़िगर करेंगे. अभी तो 2 ही हैं. सो विल कॉन्फ़िगर ऐड मोर राउट्स. जैसे कि अभी मैंने बताया जो एग्जांपल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वॉइस ट्रैफिक कोई पर्टिकुलर ISP से भेजना है, देन यू कैन सेंड इट. या फिर कोई 2 ISP से भेजना है, लोड बैलेंस करवाना है, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना है, कैसे भी जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, इस हिसाब से हम यहाँ पे SD-WAN राउट्स एंड पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे. सो सी जो दूसरे वेंडर्स होते हैं, ये ऑफ कोर्स जो FortiGate में अलग से, वहाँ पे भी आप सेम चीजें कर सकते हो, बट हम यहाँ पे सोफोस फायरवॉल पे कैसे करते हैं वो हम कंप्लीटली डेडिकेटेड देखेंगे यहाँ पे. ये सपोज दूसरे डिवाइस में भी कर सकते हैं, मेराकी में भी होता है और रेस्ट ऑफ द वेंडर्स में भी अवेलेबल है. यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर ऑन पालो अल्टो एंड ऑल द फायरवॉल्स. जो भी फायरवॉल्स आपने अभी तक उसके ऊपर जिसके ऊपर काम किया, यू कैन डेफिनेटली कॉन्फ़िगर SD-WAN. बट हियर सोफोस पे कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, जैसे 2 हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, 3 इंटरनेट कनेक्शन है, 2 MPLS कनेक्शन है. हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को हमने IPSecVPN से कनेक्ट किया हुआ है. अगर कोई IPSecVPN 2 है, अगर कोई फेल होता है तो दूसरे जो एक्टिव होगा वहां से ट्रैफिक जाएगा, वहां पे भी फेल हो, यानी हमें 0 डाउन टाइम मिलेगा. एज वेल एज MPLS में भी हमने SD-WAN से उसको फेल ओवर करा है. अगर कोई MPLS फेल होता है तो दूसरे MPLS से जाएगा, अगर दोनों MPLS फेल होता है तो IPsec से जाएगा. सो दिस वे वी कैन डिफाइन देयर राउट्स. रनबुक के हिसाब से करते हैं सारे दूसरे वो राउटर्स लोग भी करते हैं वैसे ही. हाँ. या सॉरी, नहीं, रनबुक के हिसाब से करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में. आई एम सॉरी, आई डिड नॉट गेट यू. LLD रनबुक बोलते हैं ना? हेलो, हेलो, हाँ, मेरी आवाज सुना रही? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. हेलो सर. या टेल मी. हेलो. यस, प्लीज टेल मी. तो हमारे प्रोजेक्ट में LLD रनबुक के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सर. ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सोफोस फायरवॉल डिप्लॉय करना है, सो विद SD-WAN अगर आपके नेटवर्क पे करना है या फिर कोई ब्रांच ऑफिस भी सेटअप करना है, देन यू कैन डू इट हियर एज वेल. थैंक यू सर. हेलो सर. यस प्रणब, या टेल मी. सर एक क्वेश्चन है. यप, यस. सर अगर फायरवॉल में हम जो पॉलिसी अप्लाई करते हैं सब प्रॉपर्ली काम कर रहा है, लेकिन अगर फायरवॉल लगाने के बाद वो नेट मतलब जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा मतलब बहुत स्लो हो रहा है, इसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है सर? मतलब पॉलिसी जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, जैसे कि IPsec भी काम कर रहा है, जो ब्राउजिंग पॉलिसी वो भी काम कर रहा है, तो वो सब काम सब कर रहा है, लेकिन जो डेटा थ्रूपुट है वो बहुत कम हो गया है. इसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं?
देखो रूट कोज पहले हम देखेंगे कि पहले एनालाइज करना पड़ेगा एक्चुअली आपको इशू एग्जैक्टली क्या रहा है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से इंटरनेट स्लो चल रहा है तो इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं कि फायरवॉल से ही इशू, इट कैन बी मल्टीपल रीजंस। सो ट्रबल शूट कैसे करेंगे हम फायरवॉल से? हम कर सकते हैं लेट्स से एक डायरेक्ट कोई पोर्ट अवेलेबल है फायरवॉल पे, तो वहाँ पे एक डायरेक्ट लैपटॉप लगा के हम चेक कर सकते हैं वेदर हमने अगर लैपटॉप डायरेक्ट कनेक्ट किया है तो इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है देन डेफिनेटली हमें टोपोलॉजी पे ट्रेस रूट करना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो इशू क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज द वन ऑफ द वे यू कैन चेक इट। अदर थिंग, अगर आपने सोफोस की पॉलिसी लगाते उसके बाद इशू आ रहा है देन वी कैन फिक्स दैट पॉलिसीज विद हेल्प ऑफ लॉग व्यूअर्स, लॉग्स चेक करेंगे और उसमें से जैसे कुछ ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है जो हमें अलाउड करना है वी कैन अलाउड ऑन दोस पॉलिसी। सो दिस वे यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम द फायरवॉल फर्स्ट। सो पहले तो पहला स्टेप क्या होगा, अगर पॉसिबल है तो डायरेक्ट एक अगर कोई पोर्ट खाली है तो वहाँ पे लैपटॉप लगा के connect karo and see whether everything is working fine or not. If it is working fine, then we might have to look into the next hops that we have on your topology. So troubleshoot करेंगे, we will see as you can see तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप अपना सेम सिनेरियो यहाँ पे भी लैब परचेज करके सेम क्रिएट करो यहाँ पे एंड सी वेयर यू कैन फाइंड दैट सेम एग्जैक्ट इशू। अगर आप लाइव एनवायरनमेंट में अगर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है इन ईच एंड एवरी होप्स या फिर डिवाइस जितने भी उसके पास एक्सेस कभी कभी नहीं होता, सो सेम चीज आप यहाँ पे वेरीफाई करके कर सकते हो कहाँ पे इशू है। बट अगर आपको फायरवॉल से चेक करना है कि नहीं सोफोस से हमें पहले वेरीफाई करना है कि वहाँ पे इशू है कि नहीं, देन यू कैन सिंपली डू टू थिंग्स, यू कैन बाईपास वन पर्टिकुलर सिस्टम or you can connect that particular system and verify whether everything is working or not. Okay? सर अगर फायरवॉल का पॉलिसी अप्लाई करने के बाद ही इशू हो रहा है, मतलब पॉलिसी सब काम कर रहा है और ये हमने चेक कर लिया, हाँ वो फायरवॉल से सब कनेक्टेड है, तब ये इशू हो रहा है। ठीक है, फायरवॉल कनेक्ट करने इशू आता है। ओके, तो आप मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे जैसे कि आप जब फायरवॉल से इशू क्या आता है जब आप लैपटॉप के यूजर के लैपटॉप में आप होते हैं, लाइक इंटरनेट नहीं चलता है या फिर ड्रॉप्स? नहीं सर, इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है, काम सब कुछ होता है, जैसे कि आपका ब्राउजिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली काम करता है, आईपीसेक प्रॉपर्ली काम, सब कुछ काम करता है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है स्लो हो जाता है। ठीक है, आप क्या करो, एक जब भी सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। लेट्स से इफ आई गो टू डायग्नोस्टिक्स, ओके, सबसे पहले आपका तो बहुत सारे रूल्स होंगे फॉर एग्जांपल। सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट चेक कहाँ से कौन से रूल से ट्रैफिक जा रहा है, जो आपने रूल कॉन्फ़िगर किया है उसी रूल से ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं। ओके, लेट्स से आई एम डूइंग अ पिंग टुवर्ड्स इंटरनेट, लेट मी जस्ट स्टार्ट द पैकेट कैप्चर फर्स्ट। तो पैकेट कैप्चर स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी जस्ट मेक अ पिंग टुवर्ड्स 8.8. Let me just start 8.8.8. All right, so I can ping 8.8. I can see, let me refresh the packet capture. So I can see traffic आ रहा है मेरा पोर्ट A से। All right, I can see मेरा सिस्टम का IP क्या है 162.16.1600 और उसने पोर्ट B से आउट कर दिया, वो मेरा ISP है, राइट। तो यहाँ से मेरा आउट हो गया एंड आई कैन सी नेट ID 2 एंड रूल ID 5। तो मेरा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, रूल ID 5 से जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, नेट ID और रूल ID देखना है कहाँ से जा रहा है। सो लेट मी go to rules and policy then. Okay, so let me check that rule. Where is that rule ID 5? So here it is. So here is the rule 5. तो ट्रैफिक मेरा अभी कहाँ इंटरनेट से जा रहा है, ये वाले रूल से जा रहा है, ये मेरा डिफॉल्ट रूल है। तो अभी तो मेरे फायरवॉल पे तो कोई पॉलिसी लगी नहीं, मेरे को तो कुछ इशू नहीं आ रहा है। सो दैट्स द रीजन। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये प्लेन फायरवॉल रूल है। प्लेन फायरवॉल यानी सब कुछ बाईपास है, यहाँ पे मैंने कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज नहीं लगाई, ना ही मैंने वेब फिल्टर पॉलिसीज लगाई है, ना ही मैंने कोई एप्लीकेशन कंट्रोल लगाया हुआ है यहाँ पे, नो ट्रैफिक शेपिंग। तो अगर आपने ट्रैफिक शेपिंग लगाया तो यू कैन चेक। सो विदाउट डिस्टर्बिंग कैसे हम चेक करेंगे, ऑलराइट, कि एग्जिस्टिंग को कुछ चेंज नहीं करना है। तो एक टेस्ट रूल बनाओ हमेशा, अगर इसमें कोई सेटिंग्स लगी हुई है, लेट्स से मेरा रूट ट्रैफिक 5 से जा रहा था और उस पर मैंने वेब फिल्टर, इसमें कोई पॉलिसीज लगी हुई है, ऑलराइट, एंड यू डोंट वांट टू हैम्पर द नेटवर्क, just go to again the firewall rule
क्लिक ऑन ऐड फायरवॉल, न्यू फायरवॉल रूल, और इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे हम, एक टेस्ट रूल शिफ्ट करेंगे, इसको हम टॉप पे रखेंगे ये रूल को, ओके, फॉर टेस्टिंग पर्पस। रूल ग्रुप नन करना है, ऑलराइट। ये क्यों करना है, टेस्टिंग के लिए, यानी हम क्या करेंगे, जो ये मेरा सिस्टम है उसमें इंटरनेट स्लो चल रहा है मेरा, तो चेक करने के लिए कि फायरवॉल की पॉलिसी में इशू तो है, वो तो पता चल गया कि इशू में पॉलिसी हटा दे रहा हूँ तो मेरा चल रहा है, तो ये नहीं चल रहा है, ठीक है। मीन्स पॉलिसी लगाता हूँ तो इशू आ रहा है, अगर पॉलिसी नहीं रख रहा हूँ तो चल रहा है। सो लेट मी जस्ट select the LAN zone and WAN zone. Okay, so LAN zone and source जो डिवाइस होगा वो मेरा सिस्टम का आईपी होगा। So let me just add it. Okay, click on IP डालते हैं लेट से, और मैं अपना एक जो सिस्टम पे टेस्ट कर रहा हूँ उस सिस्टम का मैं आईपी डालूंगा यहाँ पे। ओके, सो लेट मी जस्ट पुट एंड क्लिक ऑन सेव। तो मेरा यहाँ पे आ गया, सोर्स पे लैन सिलेक्ट किया, आईपी डाला यहाँ पे मैंने, एंड वैन, एंड सिंपली सेव करना है, यानी मैं कोई पॉलिसी अभी नहीं लगा रहा हूँ। तो ये रूल क्या होगा, टॉप पे आएगा। ओके, टॉप पे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो फायरवॉल होते हैं, रूल्स जो होता है वो टॉप टू बॉटम काम करता है, यानी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, टॉप वाले रूल, जस्ट लाइक पीसीएल, राइट। सो दिस इज द टेस्ट रूल, यानी अगर ट्रैफिक 100 से आ रहा है, 172 16 1600 जो मेरा ये सिस्टम है वहां से आ रहा है, तो हमेशा ये ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। रूल आईडी कौन सा क्रिएट हुआ, 10, राइट। सो वेरीफाई करते हैं, अगेन गो टू पैकेट कैप्चर, सिर्फ वेरीफाई करना है। सो लेट मी जस्ट टर्न ऑन एंड क्लियर द पैकेट एंड टर्न दिस पैकेट कैप्चर ऑन, और एक बार पिंग मारते हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट पिंग 8.8.8, okay, so refresh, so I can see the traffic, right। कौन से रूल पे जा रहा है अभी, 10 पे जा रहा है, राइट, जो मैंने अभी क्रिएट किया। तो अभी मेरा कोई इशू नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इशू फायरवॉल की पॉलिसी में। अगर आपने पॉलिसी लगाई हुई है, लेट्स से कोई पॉलिसी लगाई है, जस्ट गिव मोमेंट, लेट्स से यहाँ पे वेब फिल्टर लगाया हुआ है, इफ आई अप्लाई वेब अलाउ, और डिफॉल्ट पॉलिसीज है ये, तो मैं डिफॉल्ट पॉलिसी लगा के सेव कर रहा हूँ। अगर इशू आता है तो यहाँ पे हो सकता है आपका वेब फिल्टर में इशू, अगर आपने वेब फिल्टर पॉलिसी कोई लगाई है तो भी इशू नहीं आ रहा है, देन अप्लाई वेब एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी, जो आपके एग्जिस्टिंग रूल पे, पहले आपने जो रूल चेक किया था, राइट, पहले रूल 5 से जा रहा था, उसमें पॉलिसीज लगी थी, राइट, तो वही पॉलिसी अप्लाई करो 1 by 1, पहले वेब फिल्टर लगा के देखो कि हो रहा है कि नहीं, चल रहा है, इट्स ओके, देन गो विद दी एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी, वो लगा के देखो जो आपकी एग्जिस्टिंग रूल पे था, टेस्ट रूल पे लगाना है, और यहाँ पे वो लगाओ, एक एक करके देखो कि कौन सी पॉलिसी लगाने के बाद वो इशू क्रिएट हो रहा है। अगर वो है तो आपका फील्ड पॉलिसीज में इशू है, देन डेफिनेटली आप लॉग्स देख के उसको अलाउ कर सकते हैं, यू कैन फिक्स इट। ओके, और डिपेंड करेगा कि और क्या आपने सेटिंग्स एनेबल किए। लेट्स से इफ आई गो टू इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हियर, अगर आपने यहाँ पे डोस, यहाँ पे सब में यस है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे ड्रॉप्स हो रहा है सिंक, या फिर मेनली अगर किसी ने गलती से टीसीपी फ्लड एनेबल कर दिया है, ऑलराइट, but so just disable it. You can go to DOS and spoof prevention, and you can, अगर यहाँ पे ये tick mark है, alright, then it will drop the traffic after this amount of packets। अगर ये हम DOS के बारे में पढ़ेंगे, so कौन सी पॉलिसी कैसे हम DOS अप्लाई करेंगे, बट अगर यहाँ पे पैकेट पर मिनट ज्यादा और ये एनेबल किया हुआ है तो हो सकता है इसकी वजह से भी आपका इंटरनेट ट्रैफिक ड्रॉप हो। और क्या चेक कर सकते हैं, लेट्स से ड्रॉप पैकेट्स चेक करना है, सो कमांड्स ऑप्शन नंबर CLI पे जाना है, ऑप्शन नंबर 4 पे जाना है, ऑलराइट, एंड यू कैन सी, यू कैन चेक एंड ड्रॉप पैकेट, ओके, और जो होस्ट है, लेट्स से होस्ट 172.16.1600 था, राइट, एंड सी कि आपको यहाँ पे कोई ड्रॉप्स मिल रहा है कि नहीं। सो ये आपको हेल्प करेगा कि, या फिर राइट डायरेक्शन में आपको ले जाएगा, कहाँ पे आपको एग्जैक्टली चेक करना है किसकी वजह से ड्रॉप हो रहा है। सो देखो ड्रॉप आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है then might be the other issues as well। so these are the multiple steps you can check। okay, प्रणब, और भी चेक करेंगे आपका ऐप का जो इशू है, वो हो सकता है कि मैं लाइव भी देखना पड़े, क्योंकि आपका नेटवर्क शायद बड़ा भी हो सकता है। if you are still working, if you are working then you might have multiple hops। so
आपको सोफोस में अगर इशू नहीं है तो डायरेक्शन भी बताएगा कौन से नेक्स्ट होप पे चेक करना है, कहाँ पे इशू, जैसे अभी आपने एमपीएलएस चेक किया, राइट? राइट सर, स्टेप बाय स्टेप वो देखना पड़ेगा। यस, दैट्स करेक्ट। यस, सो हम फर्मवेयर भी देखेंगे, जैसे कि आपने कौन कौन से फर्मवेयर पे काम किया है प्रणब? नहीं, हमने एक्चुअली दूसरा सॉरी, जस्ट गिव अ मिनट। या हेलो। हाँ, एक्चुअली मैंने दूसरा एक फायरवॉल पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसा इशू आ रहा है। अब सपोज में मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये चीज है। ठीक है, अगर आप सोफोस मीन्स मेरे साथ यहाँ पे अभी बैच कंप्लीट करेंगे, डेफिनेटली आपको एक सोफोस से अगर इशू है तो फिक्स करना डेफिनेटली आ जाएगा। अगर लेट्स से फायरवॉल से भी इशू नहीं तो फायरवॉल से हम कैसे राइट डायरेक्शन में कौन से नोड पे चेक करना है वो भी हमें फायरवॉल से पता चल सकता है। यहाँ पे हम जब लैब्स करेंगे तब आपको और आइडिया आएगा कि जब हम नेक्स्ट होप कौन सा देखना है, जैसे स्विच साइड इशू है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्विच में भी इशू होता है, राइट? अगर हमने कुछ लेट्स से हाँ सर। वीलैन कॉन्फ़िगर की या फिर कोई हमने लैग कॉन्फ़िगर किया है और कोई भी कुछ भी कॉन्फ़िगर किया है, सो वी कैन चेक फ्रॉम वेयर द एग्जैक्ट द इशू इज, क्योंकि हम यहाँ से लॉग्स देखेंगे, टीसी डंप्स देखे, कभी मैंने आपको ट्रैफिक देखा है कैसे इन आउट होता है, राइट? हम उसको और भी हर एक लैब में पैकेट कैप्चर और ये CLI तो ओपन करके ही रखेंगे और टीसीपी डंप चेक करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कमांड टीसीपी डंप होस्ट, लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस कमांड। जैसे कि मैं पिंग कनेक्टिविटी देख रहा हूँ तो मुझे इसमें पता चलता है कि कहाँ से मेरा ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, इसके हिसाब से मैं स्टेप्स लेके उसको फिक्स कर सकता हूँ। Alright, so let's say I'm taking some TCP dump on port 8080, so I can see some traffic is going in and out, right? Ingress and outgress. So we'll discuss about ingress, outgress for fast path, slow path, definitely. But हमें यहाँ से पता चलेगा कि कहाँ पे इशू है, फाउल से इशू है या फिर कोई उसका नेबर डिवाइस है वहां से इशू है। राइट, सो विल सी इन द लैब, उसको ही क्रिएट करेंगे, लैब पे ही क्रिएट करेंगे शायद, तो आपको और आइडिया आएगा। ऑलराइट, सो लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू अनदर कंपनी तो आप उसका नेटवर्क स्टडी कर सकते हो, यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो पूरा का पूरा। ओके, मल्टी वेंडर्स होते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि सोफोस का ही इकोसिस्टम, सोफोस के ही आप स्विच यूज करोगे या फिर एपी यूज करेंगे। कंपनीज अलग अलग वेंडर्स भी यूज करती है, तो वो भी आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, एंड बिफोर गोइंग टू दैट कंपनी यू कैन फिगर इट आउट व्हाट इश्यूज कैन बी हैपन और एग्जिस्टिंग क्या है उसको फिक्स कैसे करना है एंड सो ऑन। और जो एग्जिस्टिंग में भी काम कर रहे हो उस यहाँ पे भी सेम डिप्लॉय करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट सर, एक क्वेश्चन है, जस्ट चाहिए। आप क्या सर पालो अल्टो की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो आप? या वी प्रोवाइड पालो अल्टो ट्रेनिंग एज वेल। तो पालो अल्टो भी करेंगे, जैसे कि यहाँ से एक ऑफिस में आपका पालो अल्टो है और दूसरे ऑफिस में सोफोस है, तो आईपी से कनेक्शन जनरली कनेक्टिविटी होती है, राइट? So we can make those connectivity from the other firewall. But yes, of course, if you want to learn about Palo Alto, you can enroll it. You can contact the team and you can enroll for that. But this session is dedicated for Sophos XGS firewall. हाँ सर, वो तो देख रहा हूँ। Yeah, you can मैं contact. जस्ट एक क्वेश्चन, जस्ट आप पालो अल्टो प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते हो? Yeah, we provide. Yes, जानना yes, चाहता of course. Yes, we provide. ओके सर। All right, so those who are already working with Sophos, so we will next configuration जो होगा, जैसे कि we will learn about the security, we will secure, as you can see there is icon here, so we'll see what is difference between non-secure and secure connection with the Sophos firewall. हम Sophos को as a certificate authority use करेंगे, all right, and we will make our secure connections. So let me just go and verify some other things. So yeah, this would be connect, जो अभी तक हमने देखा वो हमने देखा कनेक्टिविटी। ऑलराइट, अभी तक हमने कनेक्टिविटी देखा हमारा हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में। ऑलराइट, देन वी हैव लुक इनटू द HA एक्टिव, वी विल डिप्लॉय एक्टिव पैसिव इन द नेक्स्ट बैच। और सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम उसका CLI एंड GUI दोनों पे पैकेट कैप्चर्स, कमांड्स एंड सारे वेरीफाई करेंगे, हाउ टू फिक्स अगर कोई इशू आ रहा है कि नहीं, एंड ऑल द थिंग्स। And last time we have done Sophos Central, right? So you can manage your firewalls from here, means बाहर से access करना, lab का ही firewall है, so we can access that firewall from here. So you can see active, passive, all connections, and here once you click here,
तो फायरवॉल पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, ऑलराइट, फ्रॉम आउटसाइड। ये हमारे लैब का ही फायरवॉल है, ऑलराइट। तो आप उसको इसको यस इंटीग्रेट कर सकते हो। सो लेट मी शो यू दैट सेटिंग। इफ आई गो टू Sophos Central here, let me just go there, and मैंने उसको यहाँ पे रजिस्टर किया है फायरवॉल को। सो आई रजिस्टर ऑल द फायरवॉल्स on Sophos Central, as you can see here. Alright, so we will see कौन सी लिमिटेशन से, लेट्स से एक्टिव में आपका एक लिमिटेशन आ जाएगा, सिंक्रोनाइज ऐप कंट्रोल आप यूज कर सकते हैं, बट यू कैन यूज इन एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव डिप्लॉय करते हैं, बेस्ट है, ऑलराइट। एंड वी विल मैनेज द फायरवॉल फ्रॉम द क्लाउड रूल्स। अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन रूल कॉन्फ़िगर करना है, ऑलराइट, सिक्योरली बाहर से एक्सेस करना है, एंड आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है मल्टीपल फायरवॉल पे, या फिर फर्मवेयर अपडेट करना है, बैकअप लेना है, रिपोर्ट्स आपको देखना है, देन यू विल सी। सो रिपोर्ट सेशन में भी मैंने आपको जो मॉड्यूल था, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट है, ट्रैफिक, okay, executive reports, and we have the user quota, UTQ reports, and so on. So we'll see these reports in detail, और इसकी इस हिसाब से हम उसका एक्शन लेंगे आप, alright. So currently let's see, diagnostic पे जाते हैं, थोड़ा सा पैकेट कैप्चर देखते हैं क्या है। So let's go to packet capture and let me type host sophos.com. Okay, अब कोई भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, click on save. And let me just clear the packet capture, turn the packet capture on. Okay, और यहाँ पे भी कर देते हैं यार। Let me just type TCP dump and sophos.com. तो let's see three-way handshake right now. Three-way handshake देखते हैं कैसे होगा। Three-way handshake फाइल से देख सकते हैं, तो stateful stateless clear हो जाएगा, all right. So let me open the file sophos.com. So let me just go to GUI, sorry, CLI, so I can see the traffic, right? Let me just press Control C so I can see packet has been captured. Okay, so these are the packets. Okay, let me just do one thing, minimize, and I can see the website is open. And if I click on refresh, I can see the traffic, right? Here it is. तो मेरा ये दो पैकेट्स है। So port A से मेरा ट्रैफिक आ रहा है। Let's say I'm picking up this packet. So मेरा पोर्ट ए से ट्रैफिक आ रहा है, मेरा सिस्टम का आईपी तो पता है 172.16.1600, और ये रिजोल्व होकर आईपी है sophos.com. ओके, डीएनएस रिजोल्व हुआ है, वी विल सी दैट। एंड उसने फॉरवर्ड कर दिया पोर्ट बी को, ऑलराइट। और इफ यू जस्ट चेक, इट इज अ टीसीपी कनेक्शन, पैकेट टाइप इज टीसीपी कनेक्शन, in and out, and zero source and destination IP, source port, destination port 443. कान बंद करके मुझे हंसना को माना नहीं बोल रही यार काम। Okay, so the source port is the random port, destination is 443. Okay, as it is on HTTPS. Net rule कौन सा यूज कर रहा है? 2. So net rules देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। So we'll see net rules. So as of now, it is passing from net rule ID 2. We'll see what is rule ID 2 here. Okay, तो जब भी आप Sophos डिप्लॉय करते हो, सबसे पहले तो है ना, आपको you don't have to worry about the net rules or the firewall rules. Okay, क्योंकि जैसे आप जो लास्ट सेशन में आपको मैंने डिप्लॉय करके बताया था, राइट, रजिस्टर किया था, टर्न ऑन किया था, देन सिंपली हमने इंटरनेट दिया था, इंटरनेट हमें मिल चुका था, दैट्स इट। तो वही रूल है, डिफॉल्ट रूल है ये वाला, नेट रूल 2। सो विल सी दैट, विल कॉन्फ़िगर आवर ओन नेट रूल्स। अगर कोई पर्टिकुलर आईएसपी ने आपको आईपी पूल दिया है, उसके थ्रू से आपको, जब आप व्हाट इज माय आईपी करते हो, राइट, अगर आपने व्हाट इज माय आईपी किया, आपका इंटरनेट का आईपी आ रहा है और कोई आईपी पूल है और उससे आपको व्हाट इज आईपी करे, अगर वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आती है, सो वी विल डू विद द हेल्प ऑफ नेट रूल। सो विल सी दैट, डोंट वरी। देन वी हैव फायरवॉल रूल आईडी 10 जो मैंने क्रिएट किया था, राइट, टेस्ट वाला रूल। सो लेट मी डिलीट दैट रूल, चलो डिलीट कर देते हैं। सो उसके बाद ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? 5 से। सो ट्रैफिक विल ऑलवेज पास फ्रॉम, जो रूल्स कैसे फॉलो होते हैं, टॉप टू बॉटम। तो हमारा जो रूल्स होंगे वो टॉप टू बॉटम सब काम करेंगे। ओके, व्हेन वी हैव सम फोल्डर्स, we will configure the rules as per these folders. So this is LAN to WAN rule. Okay, so this is rule ID 10. Let me just delete the rule ID 10. Once it is deleted,
Okay, those who have doubt, just raise your hands. Okay. So rule ID 10 has been deleted. तो ट्रैफिक अभी कहाँ से जाएगा? 5 से जाएगा, राइट? क्योंकि एक ही रूल है LAN to WAN. अगर मैं देखूं LAN to WAN रूल कितने हैं मेरे पास? ओके, तो एक ही है. So if I go to diagnostic packet capture, and if I just turn on this, let me clear and refresh this page. Okay, click on refresh. Okay, so I can see traffic is passing from rule ID 5. अभी 5 पे जा रहा है, right? So we can troubleshoot the issue. अगर इससे पता चलेगा कि मेरा जो ट्रैफिक है वो जो मैंने रूल क्रिएट किया है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वहां से ही जा रहा है, भले वो MPLS के लिए हो या फिर आपके IPsec के लिए हो, इंटरनेट के लिए हो, एंड सो यू कैन वेरीफाई यहाँ से कि वो ट्रैफिक अभी मैंने रूल क्रिएट किया है जो मैंने डेफिनेशंस डिफाइन की है उससे ही ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं. ऑलराइट, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट what are the rules if the configuration is not working causing the issue. आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि वायलेशन भी आ रहा है, राइट? यहाँ पे so we can see accordingly. So let me just check what is net ID 2. So these are the default net. Okay, so default net है यहाँ पे. So this is the rule ID 2. You can see here. Okay, तो ID यहाँ पे और ये rule number है. So don't get confused here and here. So these are the rule ID. तो सारा इंटरनेट का ट्रैफिक मेरा कहाँ से जाएगा? Rule net ID 2 से जाएगा. If I click, so this is the way it looks. तो ऐसे लिखेगा network. All right, we will configure that and we will understand each of this parameter one by one in the module. जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है नेटवर्क प्रोटेक्शन, जो आपने अगर लास्ट सेशन अटेंड किया है तो उसमें नेटवर्क प्रोटेक्शन में जब हमारा मॉड्यूल आएगा तो आपको एक एक जो यहाँ पे सेटिंग्स है, ठीक है, हम उसको एक एक को अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते. ऑलराइट, सो एक लास्ट चीज करते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं. ऑलराइट, लेट्स से पोर्ट फॉरवर्डिंग. सो फॉर दैट व्हाट कैन आई डू? लेट मी check whether any service is running or not. कोई सर्विस रन हो रही है यहाँ पे. 172.16.16.1600 जो है वो मेरा सिस्टम का IP है. या सो आई थिंक इट इज वर्किंग, राइट? ये मेरा लोकल IP है, ठीक है, यानी मेरा ये जो सिस्टम है उस पर एक वेबसाइट चल रही है. सो लेट्स पब्लिश इट आउटसाइड, ओके, विद हेल्प ऑफ रूल. सो पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट विल डू, क्लिक ऑन ऐड रूल्स, सर्वर असिस्टेंट DNet रूल पे क्लिक करना है. ऑलराइट, ऑटोमेटिक रूल हो जाएगा, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी. तो ये पॉपअप आएगा. लेट मी जस्ट जूम इट इफ आई कैन. या ओके. ऑलराइट, सो इंटरनल IP एड्रेस जो आपका सर्वर का IP है उसको सिलेक्ट करो. लेट मी सी इफ आई हैव. या आई हैव. ओके, 100. सिंपल. क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ सिलेक्ट द पब्लिक IP जहाँ से आपको होस्ट करना है बाहर से. सो यू कैन सिलेक्ट दैट IP. लेट्स से पोर्ट B पे से करूंगा मैं. क्लिक ऑन नेक्स्ट. कौन सी सर्विस है? तो यू कैन सिलेक्ट द सर्विस दैट यू वांट टू होस्ट फ्रॉम आउटसाइड. ऑलराइट, let me check port 80 for test purpose. Click on apply. Click on next. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं. बाहर से मेरे को एक्सेस करना है. ऑलराइट, यानी इंटरनेट से एक्सेस करना है. एंड कौन एक्सेस कर सकता है? एनीवन. ओके, जस्ट कीप एनी हियर. ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ दैट DNet रूल पोर्ट फॉरवर्डिंग. ठीक है, सो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नेट एंड पैट. पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट एड्रेस ट्रांसलेशन. अभी नेट एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहे हैं. ऑलराइट, यानी पोर्ट टू पोर्ट ही कर रहे हैं. बट पैट क्या है, नेट क्या है, आपको इधर से ही पता चल जाएगा. बहुत ईजी. देन क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश. ऑटोमेटिक रूल क्रिएट हो जाएंगे. राइट, सो अभी मेरा जो एक्सेस है कौन से IP से आना चाहिए? पोर्ट B के IP से एक्सेस आना चाहिए, राइट, जो मेरा ये सिस्टम है. सो आई कैन सी आई कैन एक्सेस विद हेल्प ऑफ 172.16.1600, बट इंटरनेट जो मेरा पब्लिक IP है उससे मेरा एक्सेस आना चाहिए, राइट. सो लेट्स वेट फॉर टू गेट इट सेव.
Let me take the doubts meanwhile. Anyone has any doubt? Ketan, do you have any doubt? You have raised your hand. Okay, I think no one has right now. Okay, let's look into that GuiNet rule. Okay, no worries. Just say modules आएंगे, doubts आएंगे, no worries. Okay, no worries. We are ending the session for today. Tomorrow we will join. All right. So आज हमने जो configure किया port forwarding किया है, all right, DNet tool. So we'll see traffic यहाँ से जा रहा है, all right, and I can see some net rule are created. Okay, तो ये net rule automatic create हो चुके हैं यहाँ पे, so we don't have to worry. So let's check जो port B है उसका IP क्या है? 192.168.98.2. Okay, तो उससे आना चाहिए, right? So 192.168.98.2. So it's not working. So what you have to do next? Packet capture. Okay. So always check the packet capture. You will get the idea what is happening. So host 192.168.98.2 and port port 80. Okay, so this is the command. Just put it and execute done on the packet capture. Let's see why it is not working. So I can see violation, right? उसको rule नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ पे. Let me refresh it then. Refresh करते हैं इसको. Okay, so let me refresh. Okay, so I can see it is not getting the rule. Okay, clear करो इसको and let me refresh it again. Yeah, I can see the violation, right? If you just scroll, तो देखो उसको कोई rule नहीं मिल रहा है. That is the reason. तो रूल बनाते हैं क्योंकि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, पोर्ट ए से आ रहा है, राइट? सो व्हाट विल डू, लेट मी जस्ट क्रिएट वन रूल क्योंकि मैं लैन से कर रहा हूँ, राइट? सो विल क्रिएट दैट रूल, लैन टू लैन रूल. ओके, सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव, टॉप पे रखते हैं, ऑलराइट. ऑटोमेटिक लैन, select LAN zone, source zone any, LAN. Okay, don't worry about that because I will be much faster, but you will, after this course, you must be more faster than me after learning all these things. All right, so let's just configure this rule. So I will select port B is my destination now. Okay, I will just tell you why this happens, because as per the packet capture उसको रूल ही नहीं मिल रहा है, राइट? क्योंकि मैं लैंड से कर रहा हूँ, बाहर से तो कर नहीं रहा हूँ, लैंड से कर रहा हूँ और मैं आईपी से कर रहा हूँ, पब्लिक आईपी. सो विल सी इफ it works or not. Okay, so in this case we will understand whether it is issue from the firewall end तो या फिर ISP में पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं किया हुआ है ना? यहाँ से तो कर दिया मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग, बट ISP से नहीं पता है. सो हाउ विल चेक दैट? So TCP dump, let's say TCP dump also, let's take drop. Okay, firewall drop कर रहा है कि नहीं वो देखना है मुझे. So let's see 98 dot, I think it is 2. Okay, so let me just go to and refresh the page if I get any drops. अगर drops नहीं मिल रहा है, so if I'm not getting drop, that means the issue is not from the firewall. तो हमें fix करना है, right? कहाँ पे है? तो ISP राउटर ये है मेरा. चलो इसका जरा सेटिंग्स देख लेते हैं. what is the settings here? Okay, so show run, let me see. Okay, so I can see 98.1, right? ये मेरा गेटवे है firewall के लिए, and this is my ISP. And yeah, यहाँ से पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा.
Okay, let me just do it. If I can IP net. Okay, no worries if you don't know this, we will discuss everything, but as of now सिर्फ commands देख लो कि मेरा पर्पस क्या है, बाहर से एक्सेस करना है वेबसाइट. ओके, तो मेरा जो फायरवॉल है, ठीक है, उसके ऊपर एक नेटेड डिवाइस है, यहाँ पे भी और एक नेट डिवाइस है, तो मुझे नेटिंग करना पड़ेगा ना, यहाँ से भी पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा. अगर फायरवॉल से नेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा नेट डिवाइस है, यानी गेटवे डिवाइस है, ये भी गेटवे है, राइट, सोफोस भी गेटवे, सिस्को भी गेटवे. तो अगर गेटवे तो पोर्ट फॉरवर्डिंग मेरे को करना ही पड़ेगा, राइट. सो वी कैन कॉन्फ़िगर दैट. लेट्स सी स्टैटिक, व्हाट इज नेक्स्ट, that is the TCP 192.168.98.2 port, I think port number, yeah, port number 80, and interface, I think it is Ethernet 0/1 port 80. Okay, let me just go to that PC now. और यहाँ पे मैं TCP dump चालू करता हूँ. TCP dump host 192.168.98. या देखो अभी शायद ट्रैफिक तो आ रहा है. लेट्स सी नाउ पोर्ट, लेट मी चेक फॉर पोर्ट 80. okay, let me just refresh it if I can get the access. Go back to diagnostic, packet capture, and let's see where we are wrong right now. So let me just remove port 80. Clear the logs. What we can do is that, just give a moment. Yeah, go to network. Let me just verify the IP address. It's 98.2. Yeah, that is fine. So I have forwarded on 98.2. Yeah, this is correct. And if I just click on exit and show IP net translation, let me verify the request is coming or not. So it's not coming. Okay, so what we'll do, let me just verify whether it is working or not. I think I can check on this PC. Log in with the password. Open the browser. Okay, let's see. Let me type that IP here. It's 192.168.98.2. Ping 8.8.8.8. Okay, so that is not working. Let's find the reason. IP config. So I should be able to ping my firewall first, 116.17.16. This is in branch office. Okay, so I'm in the branch office right now. So now let me just try to access my IP. Here it is. So still not working. Wait. So internet is working or not? Let's verify that. So I will ping 8.8.8.
Destination host unreachable. Yep. So let me just access the firewall. Why internet is not working? Okay, so I got the access. Okay. Everyone can see my screen, right? Right now I am in the branch office Sophos Firewall. Are you with me? Say yes on chat. Yes. Okay. Okay, so just I will verify the internet why internet is not working, and we will finish this session for today and we will continue tomorrow. Don't worry. So let me just verify this back. Why my internet is not working. So host 8.8.8 and proto ICMP. Okay, I will share these commands with you, so don't worry. Let me just ping. So port D, traffic is passing from port D, so it should not pass from port D, right? That is my MPLS actually on the branch side. So let me just verify my event link manager. Yeah, okay, port B internet is up. Let me just add it and put IP as 8.8.8. Okay, so why I did this? Actually, this is the rule to check whether the internet is working or not. Okay, let me just open the PC back. Okay, so let me save the settings. So these settings will check, it will probe towards internet, okay, whether the internet is available on this or not. So it was green because it was probing the gateway IP, and gateway IP is always available. So for internet, so we will discuss about these settings also. So let me just go to diagnostic and ping 8.8.8 from port B. That is my ISP. Internet is working or not. So if internet is working, then we will check. Okay, so internet is available here. Now go to packet capture, and if I turned off, clear the logs, turn it on, make a ping again, and refresh it. So the traffic is passing from rule ID 5. Okay, so what is rule ID 5 and 3? Let's check. So yeah, it is from LAN to WAN. This is fine. It seems we have issue with the net, maybe. So let's verify that. So what is rule ID 3? Yeah, so traffic is passing from this rule. All right, so do one thing. Let me just disable it. I don't need this rule as of now. I will pass from the default net rule. Still, it is taking some other rule. Let me verify back. Yeah, so it's rule ID. So it's not taking the net. Okay. No worries. What we'll do, let me just go with the net. Let's play with the net then. So ऐसे ही हम फिक्स करेंगे, yes of course, जो हमारी labs भी होगी. Let me just move this rule on top as of now.
Still no? Strange. Okay, no worries. Let me just go to device settings and we'll see why internet got stopped. Reset 8.8.8.8. Yeah, it is going from MPLS. That's the reason. Okay, what we'll do, I will just take the CLI and disable it something. Okay, so T. Okay, the MPLS से जा रहा है traffic. That is the reason. So हमने find out कर लिया कि issue कहाँ पे, right? So हमें route करना है कहाँ पे? Port B पे करना है, not from on the MPLS. So let me just check the system route. This didn't show. Yeah. So what I will do, I will just change to system route set VPN, SDWAN, and static. No, it's still not going there. Let me check the SDWAN. Okay, so I think I lose the connection. So let me just revert that change. Sophos. Okay, I think this should work. ओके तो ये ऑफ कोर्स ये भी हम देखेंगे कैसे हम लास्ट चेंज यहाँ पे देख सकते हैं. सो लेट मी चेक. या स्टिल पासिंग फ्रॉम दैट. Okay, so let's do one thing. Let me just configure the rule, internet rule, internet. Okay, and port A. Okay, right now let me just configure one SD-WAN profile. So incoming is my port A and primary. Let me select the gateway instead. Would be my port B. Let me just click on save. This will help me. Okay, now I think it will work. Yeah, okay, so I got the internet. So SD-WAN, right? Okay, so this way we'll fix it. Again, let me just ping 8.8.8. All right, now let me just come to the original issue. Let me just refresh it. So here, I believe there is a issue is from other net from this router. Okay, we will fix that. Not from the Sophos, but let's check the packet capture. So let me just change the IP 192.168.98.2. Okay, and I will remove the rest of the command and type npord port 80. Turn the packet capture on. Let's see यहाँ पे क्या हो रहा है. ओके, तो यहाँ से तो ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है, राइट? देखो
but still not working. So what could be the issue? So let me just go to the PC जहाँ पे मेरा ये है. Just let me verify because everything seems to be working. If still not working, then we have to check on the router side. Yeah, so we have to check on the router side. All right, no worries, we will fix it from here, but show run. Okay, let me just verify I did the port forwarding from here or not. Yeah, it's there. Set source TCP 8080. Okay. Okay, let's check the packet capture from here on the head of this file. Okay, let's see the traffic is coming from the upstream router or not. Okay. So yeah, go to this and refresh. Okay, so I can see the traffic is coming from port B, but not going out. But we have the rules, right? Let me just verify that rule. It should pass from net ID 6. Okay, let me just do that. ये तो होना ही चाहिए. But as we have figured it out, कि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे इशू है. फायरवॉल पे भी है तो फायरवॉल पे फिक्स करना है. अगर जो नेबरिंग डिवाइस है तो नेबरिंग डिवाइस से भी करना है. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट ट्राई अगेन. We'll change the port and check. Let me put the system IP. So 172.16.1600. Okay, it will get full because we have a lot of traffic. Let me just filter for 80, port 80. Okay, so let me turn it off, turn on. You can also clear it if you see the logs and then refresh it. So it is not reaching here. Let's find out where is the issue then. सर पॉलिसी रूल्स के अंदर डेस्टिनेशन नेट के अंदर डेस्टिनेशन का आईपी नहीं आएगा. Sorry. डेस्टिनेशन नेट आपने डेस्टिनेशन नेट बनाया ना डी नेट. Yes. तो जो पॉलिसी रूल्स बनाई है आपने उधर डेस्टिनेशन का आईपी नहीं आएगा. डेस्टिनेशन नेट का आईपी. It is there. Let me show you. वो है वहाँ पे. Let me show you there. So ये destination है मेरा, right? Yes. 9. Okay, so I think I have selected wrong IP maybe. Let me just verify. 98.2. Oh, that is correct. Okay, so original would be looks good. ये जनरली मेरा अपस्ट्रीम राउटर का इशू है. कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे ठीक है. Alright, you keep it. I can see the traffic. Okay, let's say firewall कुछ drop कर रहा है कि नहीं. Let's check. First, we'll check TCP dump on 172.16.16.16. Sorry, 100 and port 80.
so after 5 minutes, we might have to drop. Okay, fine. Okay, no worries. Let's continue tomorrow because our time has been up. No worries. We will continue from here only. We'll not do anything here, but we'll see where is the exact issue. Okay, what change we did and we resolve the issue. All right, on the next class. All right. So anyone has any doubt till here? Anyone? The traffic is not coming. Okay, we will delete the rule and we'll check it again tomorrow. Okay, sir. No issue. Okay, no one is. We will continue from here. We will find out. But till now, anyone has any doubt, Ketan, apart from Ketan, Manish, Naresh, Hitesh, Jitendra? No, I don't have any doubt, sir. Okay. Okay, tomorrow we will continue from here only. All right. We'll see the DNet and we will see, we will configure each and everything from scratch. All right. We will deploy first firewall, first router, first switch from there. So this will be our topology. So we are fixing this. We will fix this. It is fixed only, but we will troubleshoot it and we'll fix the traffic. No worries. Okay. All right. So Thank you. let's end the session for today. All right. And we will meet tomorrow. Thank you Okay. guys. Thank you sir. guys for Thank you. listening and have a nice day. Thank you. See you. Bye-bye.